स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन द न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ये नया साल 2021 बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छे कलरफुल रिजल्ट्स आप लोग लेके आए एंड यू ऑल विल डू ग्रेट जॉब इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन व्हिच आर गोइंग टू बी start from the 4th May because CBSE has declared its dates that the board examination will start from the 4th of May. So all of you are in the full swing, full mood of your board exams. So here I Vivek Bharati in front of you for, as I promise you that I will launch my revision cum test series for the class 10th science, right? So today I'm going to share my first session, my first video of revision cum test series, and the topic to be shared today is chemical reaction and equations on your tips part 1, right? Here we'll have different session. I've divided the each lesson into the different sessions, and in each course and each session we'll share the topic, and we'll do at the last the completion of the chapter. We'll do the NCERT questions, and then we'll share the previously asked board exam questions from this chapter, every chapter, and and also the questions which may be asked and your board examination going to be held from the 4th May of starting from the 4th May of 2021, right? So all the best to all of you. So here today we are sharing with you with my first video revision cum test series for the class 10th science. Okay, so first of all I want to share with you chemical reaction and chemical equation, the first chapter of your NCERT book. As you all know, in lower standard just we have discussed about the changes, right? Changes, there are two types of changes we study: the physical change, chemical change. Physical change are those change in which physical properties of matter has changed, are known as physical change, while the chemical change are those in which chemical properties of matter has changed, are known as chemical change, and these chemical change are also known as chemical reaction, right? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं chemical reaction. Physical change example: melting of ice, tearing of paper, breaking of glass. These all are the physical change in which the property of matter doesn't change and no new matter is formed. That is known as physical change. पढ़ते चले आए हम लोग छोटे स्टैंडर्ड से। हम लोग यहाँ बात करेंगे केमिकल चेंज की, जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी का मैटर और एंटायर न्यू मैटर इज फॉर्म विद एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी. दैट इज नोन एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. For example, the very easy example is combustion of carbon. Carbon का जलना, right? The combustion of carbon is chemical change because the starting material is carbon and oxygen, we know, and after the combustion of carbon, what we got? Carbon dioxide. Entire new product, the different substance we obtain after the chemical change, chemical reaction, combustion of carbon. Right? So combustion of carbon is a chemical change in which our entire new property matter is formed. Right? One more example. Burning of wax candle. This is an example which comes in both category, physical as well as chemical. Right? Because burning of wax candle, what happens? मोम पिघलता है, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है. Or wax is a composition of hydrocarbons. Many carbon compounds are there which they combust and carbon dioxide is formed. So this is an example of physical as well as chemical change, right? We can say the formation of a curd from the milk is a chemical change also, right? So there are so many changes which occur around you, comes in the category of chemical or physical. You can easily categorize those changes as physical change or chemical change. चलिए आगे बात करते हैं. सेकेंड वन इज इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बहुत आसान सी बात, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो केमिस्ट्री में जिस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, दैट मेथड, दैट रिप्रेजेंटेशन इज सिंपली नोन एज केमिकल इक्वेशन.
That is, chemical equation is scientific representation of chemical reaction with the help of chemical formulas, symbols, etc. आई बात समझ में? केमिकल रिएक्शन का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, जो बताया था अभी, कंबशन ऑफ कार्बन इज ए केमिकल चेंज. इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा भाई? C plus O2 gives CO2. This is the chemical equation for the combustion of carbon. C is here carbon, representation of carbon. O2 is for oxygen. CO2 is for carbon dioxide, right? The starting material known as reactants, right? Reactants, and the substance which form after the reaction are known as product. Reactant and product, right? In between reactant and product we put an arrow which actually represent that chemical change is going on after that new substance is formed, right? So this is a chemical equation for the chemical reaction, that is combustion of carbon, right? We can also write down a word equation for a chemical reaction. किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं. वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन. बहुत सिंपल होता है वर्ड इक्वेशन लिखना. जैसे इसी के लिए हम लोग वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इन वर्ड्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाइए, लिखिए कार्बन डाई ऑक्साइड. इट बिकम्स द वर्ड इक्वेशन, राइट? तो ये हो गई हमारी भाई वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन. और ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन. और ये क्या हो गई भाई? केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? कंबशन ऑफ कार्बन, राइट? Getting my point? Combustion of carbon लिखा है. Chemical reaction, combustion of carbon. Chemical equation, C plus O2 gives CO2. This is a chemical equation. Scientific representation of chemical reaction is known as chemical equation. Word equation, उसी chemical equation के जो reactants और products हैं उनका word में नाम लिख दीजिए. This is simply known as word equation. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. This is the word equation. In this way, we can write down the chemical equation and word equation for every chemical change. Lots of chemical changes are there which we will study in our chapter, and उनकी हर एक chemical reaction की हम लोग word equation लिख सकते हैं और chemical equation लिख सकते हैं. One more thing, एक और बात हमको समझनी है कि यहाँ पर जो chemical equation लिखी है, this is balanced chemical equation. कौन सी chemical equation है भाई? Balanced, right? क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? जानते हैं आप सभी लोग. A chemical equation in which number of atoms of each element are equal in reactant as well as product side is said to be balanced. If not so, it is said to be unbalanced. Listen once again. A chemical equation in which number of atoms of every elements are equal in reactant as well as product side is said to be balanced chemical equation. If not, it is said to be, it is known as unbalanced chemical equation. For example, let us check that either this is balanced or unbalanced, right? C, carbon, one atom. Here C, one atom, carbon, carbon balance. O, two atom, oxygen, two atom. In product side, there are also two atom. So this is a balanced chemical equation. If I made a little change, that if I erase this 2, मैंने ये 2 को जो है इरेज कर दिया. नाउ चेक दैट इज इट बैलेंस और नॉट. चेक करते हैं फिर से. कार्बन वन एटम, कार्बन वन एटम, कार्बन कार्बन बैलेंस, वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन बैलेंस. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एटम, इन प्रोडक्ट साइड 1 एटम, right? So oxygen is not balanced but carbon is balanced. So in all overall chemical equation is not balanced.
For balanced chemical equation, number of atom of each element should be equal in both sides, that is reactant as well as product. Then it is said to be balanced chemical equation. And in chemistry, we always need a balanced chemical equation, because in unbalanced chemical equation, there are many laws which are not applicable for unbalanced chemical equation. Concepts are there not applicable for unbalanced chemical equation. So balanced chemical equation plays a very important role in chemistry. So keep in mind, every chemical equation should be balanced, right? After this, I will share a little more topic about this chemical equation, that how can we make a chemical equation more informative. केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ताकि हमको उस केमिकल प्रोसेस में, उस केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में होने वाली अधिक से अधिक जानकारियां मिल सके, राइट? क्या कर सकते हैं हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, कि भाई कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, राइट? सो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? वी यूज द सिंबल S, स्मॉल s in parenthesis for solid, keep in mind, L for liquid, G for gas, और एरो, डाउनवर्ड एरो, दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं, स्मॉल g और डाउनवर्ड एरो फॉर गैसियस, सॉरी अपवर्ड एरो for the gases, and downward arrow for PPT, precipitate, right? Downward arrow for precipitate and upward arrow for gas. So G or upward arrow, any one can be used for gaseous state, S for solid, L for liquid, G for gas, downward arrow for precipitate. Precipitate जानते हैं सभी लोग आप क्या होता है भाई precipitate? The substance which settle down as soon as is formed, that is known as precipitate. क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट जब बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो दे स्टार्ट टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ कंटेनर और बीकर एज सून एज दे फॉर्म, सच प्रोडक्ट आर नोन एज प्रेसिपिटेट. बात करेंगे आगे भी आएगा, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लोग बात करेंगे तो इसकी हम लोग बात करेंगे, राइट? सो फिजिकल स्टेट वी कैन मेंशन, राइट? तो यहाँ पे चलिए इसी केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं और समझते हैं इनको कैसे यूज करेंगे, राइट? जानते हैं हम लोग कार्बन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में. तो क्या लिख दिया हमने? स्मॉल पैरेंथेसिस में S स्टैंड फॉर सॉलिड. कार्बन, काला काला कोयला, कार्बन का फॉर्म है, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. S, O2 गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट? सो these physical state can be mentioned of reactant and product. More information which we can add are टेम्परेचर. अगर किसी केमिकल रिएक्शन को गर्म कर रहे हैं, रिएक्टेंट को गर्म कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम लोग उसका टेम्परेचर यहाँ एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर इट इज, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है फॉर अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन वी कैन मेंशन. वी कैन मेंशन प्रेशर, क्योंकि बहुत सारी गैसेस रिएक्शन है वो पर्टिकुलर प्रेशर पर होती हैं, राइट? सो वी कैन राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ओवर दिस arrow, right? We can write down the name of catalyst. If any catalyst is used, we can write down here in front or above or below the arrow. उस catalyst का नाम लिख सकते हैं. catalyst आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं catalyst. But in the standard of 10, catalyst means those substance which can increase the rate of chemical reaction, right? So in this way we can improve the representation of a chemical equation. एक chemical equation को हम लोग और अधिक informative बना सकते हैं by writing their physical state, by mentioning the required temperature, pressure, catalyst, etc., etc., etc. Right? So this was about the chemical reaction and a chemical equation. How will you come to know that a chemical reaction is going on? एक chemical reaction हो रही है, chemical reaction, chemical process चल रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? कुछ छोटे मोटे indications हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई chemical reaction हो रही है. क्या है वो? Change in color. अगर रिएक्टेंट का रंग बदल रहा हो, लाल से नीला, नीले से पीला,
कलरलेस से नीला, राइट। इस टाइप का अगर आपको कलर चेंज दिखाई पड़े रिएक्टेंट में तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आपके कंटेनर का टेम्परेचर घट रहा हो, बढ़ रहा हो, कंटेनर को हल्का सा यहाँ बैक में टेस्ट ट्यूब को हल्का सा टच करके देखिए, रिएक्टेंट को मिलाने के बाद यहाँ पे टच करके देखिए, ठंडा या गर्म लगे आपको ज़्यादा तो समझ जाइए भाई केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पर। क्योंकि बहुत सी केमिकल रिएक्शन में कूलिंग इफेक्ट होता है, बहुत सी केमिकल रिएक्शन में हीटिंग इफेक्ट होता है। इनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, राइट। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके होने पर हीट एनर्जी निकलती है, एक्सो जिनके होने पर एब्जॉर्ब होती है, कूलिंग इफेक्ट करते हैं, एंडोथर्मिक। सब बात करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट सेशन। आज हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर की बात कर रहे हैं और इंट्रैक्शन वीडियो है, और हमारा ये फर्स्ट सेशन है रिवीजन कम टैक्स सीरीज, राइट, फॉर क्लास 10। वी विल शेयर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ क्लास 10th science, physics and chemistry one by one we will share. So this is the first session for the chemical reaction and equation, first chapter of your NCERT, right? So ये बात हुई हमारी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, राइट। एक हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाउ वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। बहुत सारी हम लोगों ने बातें आज शेयर की। आई होप ये सारी बातें आपके पास तक पहुंची होंगी, ठीक है ना। तो अगर ये सब बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो नेक्स्ट सेशन में दीज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट सेशन of the chemical reaction of an equation, session 1. In next session we will share the next rest part of the of our chapter chemical equation, chemical equation and chemical reaction. Don't forget to see my next video, right? So and must share your comments, must share your doubt, must join my WhatsApp group which I am running, and my WhatsApp number is 9457 433 817, right? 9457 433 817. This is my WhatsApp group, WhatsApp number. Share your comments, share your doubts, and whatever you want to know in the next video. So you can share and leave your comment, and also share this video to your all of your friends so that they can also be benefited for the upcoming session, upcoming classes, and I will regularly launch share the videos on the revision come tax series on your tips, right? So till then, have a good day. All the best to all of you. Stay safe. मास्क एंड 2 गज की दूरी अभी बहुत है जरूरी. फॉलो इट एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. All the best for the upcoming exams. We'll meet in next session, chemical equation and reaction part 2. Till then, bye bye. Have a good day.